AI through which we are using it to create videos, to create a kind of information about anything. So artificial intelligence has a dominance over maximum perspective over. Artificial intelligence has also been used as far as education is concerned, and it is a preparation by our great men, our great scholars to form a question paper as well as news, as well as project work, lesson plan, or other things. In fact, it has been used to build a new technique through robotic device to use it. Not only in this area, but also in the field of medicine, it has been seen a new approach for the precise treatment during the surgery through robotic device. So it is really a miracle, a kind of surprise for all of us such applications we have in our life. Artificial intelligence has also made our lifestyle a completely changed. On the one hand, we find it easier to do a kind of work in any project or wherever we use in daily life. On the other hand, we have to also think about it. Too much dependency on technology also can make no improvement in ourselves. And we are getting so busy that we uh, have the fear to lose our creativity, our creativity. That's why artificial intelligence can be a very moving, a very dynamic, a very precise, and as far as the modified one, but it has the complications, and we have to also be careful while using it. So artificial intelligence may be a very helpful approach in our life. Regarding to how it is running its work, देखिए ध्यान से। तो ये जो आर्टिकल है ये आज आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिसमें आंसर we have also लेक्चर के दौरान जब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसमें सब्जेक्ट के बारे में आपने शेयर किया जैसे अब आपका फल है एसिडिटी में आप ऐसा प्रयोग न करें वाटर आपका कि आप ऐसे प्रयोग करेंगे वाटर इतना और दूसरी चीज जैसे कहा जाए भारत के लोग कोशिश ये करें कि इसका यूज पता आपने करें द पीपल आर द पीपल इन इंडिया जैसे कहा जाए कि भारत के लोग बहुत परिश्रमी द पीपल इन इंडिया आर वेरी हार्ड वर्किंग इस प्रकार से यूज करें और पर्सपेक्टिव आएंगे जहाँ पर आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में दिक्कतें होंगी उस पर विशेष आपको ध्यान वहाँ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको डिग्री के माध्यम से मिलेंगे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जैसे देखा जाए कि देहरादून की जलवायु इलाहाबाद की जलवायु से अधिक ठंडी तो आपको जलवायु किधर ले जाना है जिसमें पहले की चर्चा हुई तो जैसे द क्लाइमेट ऑफ देहरादून is cooler than
जलवायु की है। तो जलवायु में दो पक्ष हम रखते हैं, पहले वाला है तो उसको यह करते हैं, दूसरे को वहाँ करते हैं, यानी इलाहाबादवादी की अपेक्षा। और अगर कहा जाए कि कोलकाता भारत का सबसे बड़ा शहर है, ठीक, तो हमको अनुवाद इस प्रकार से ही नहीं बनाना है, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, बल्कि इसको कैसे बनाना है, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। और परिप्रेक्ष्य में जाए कि ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत या सबसे सुंदर, मान लीजिए वैसे तो आता है कि दुनिया की खूबसूरत इमारतों में से एक, अगर आ भी जाए इस प्रकार से, तो या यूँ कह लीजिए इस प्रकार से आ जाए कि भारत में क्या ताजमहल भारत की सबसे सुंदर इमारत है, तो इसका ट्रांसलेशन हमें इस प्रकार से नहीं करना है कि ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया, बल्कि इसको कैसे करना है, ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। तो इसे बहुत ही ट्रांसलेशन है जिनमें हमें प्रीपोजिशंस का नोटिस करना है, और फिर उसके बाद ताकि जो शुद्धता है वो ट्रांसलेशन की अधिक से अधिक रहे हमारे जो आर्टिकल्स में हमें जो गलती है कि हमें आर्टिकल का इनको देने के बाद हमें उसको सिलेक्ट करके उस पैराग्राफ को डिवाइड से दूसरे लिस्ट में जाना है, फिर उसके बाद में किस हद तक उसका लैंग्वेज को देखते हुए ये भी हमें उसमें देना है कि किस हद तक इसका यूज किया जाना चाहिए। कोशिश फिर से की जाएगी और फिर अगले आर्टिकल पर नोटिस किया जाएगा। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आई होप their students do and now, and that is really fine that the people are the most important one in this living system. Yes, perspective and living in this country. There are the three chief organs of the government, and that is legislature, executive, judiciary, and now in the present scenario, media is considered the fourth pole of the democracy. Since the beginning of the democracy in India, it has been a golden period in our country. The people elect their own government, casting their votes. And as far as the women and also the men are concerned, both of them participate without any partiality. It is the glory of democracy. And as Abraham Lincoln stated, democracy is the government of the people, for the people, and by the people. In this reference, we find a freedom in a country like democracy. Democracy generally allow the people to convey their own ideas, their own thoughts, and their own ways of life. And it is an opportunity for all of the people to communicate with the government without any fear or any hindrance. We find democracy a best one and a very liberal one in our country. It is our responsibility that we must protect it. We must also understand our fundamental duties along with our rights.
Gandhi always say, says, first you give me four, then demand the next five. These four are DUTY, that means Kartab, and the next five is RIGST, right? So we have some points to describe democracy. In democracy, the power is divided in as a state level, as a central level, as well as the secretarial, and also in local governments. And the beauty of the government is that the people can directly connect to the ruling system through media, through mail, and different types of. They can express their opinion to the government, and the government must be responsible to the people in the country. As far as our country India is concerned, it is really a best example of democracy and the largest democracy as far as the world is concerned. सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है ये. So these are the points to describe about the role of democracy in India. Now, in the next series, we find also the burning and the current problem, and that is the next article, and that is the problem of unemployment in India. भारत में बेरोजगारी की समस्या. Unemployment is also one of the burning problems in India. As we know that we have been facing this problem for a long time, as there is less job opportunities in our country as in comparative to our population. Every year, maximum number of youth are standing in the row of unemployed men. Hence, it is a matter of deep concern for all of us, because if we are unemployed, we can't expect a life which is full of standard or full of satisfaction somehow to manage our family as well as other things. And there are the many reasons for it. The first is the most one is the overpopulation. Because of the overpopulation, the job opportunities are proving a dwarf in front of them. And the second is that there is the machinery is. In the past, when there were not the machineries, the people are getting an opportunity to work as a laborer. But because of the machines, the people remain jobless in the country. On the other hand, there is not an innovative infrastructure. Even today, we are growing in the age of information and technology. We are lacking as far as the new infrastructure and the industry development. And for this, the foreign companies must be invited to invest in our country so that we can look for the solution of this problem of unemployment. The government must find an opportunity to create a vacancy where there is a lack of there is lack of vacancies are there. We see that department or many other departments, posts are vacant, but the vacancies are not filled. That's why the number of the unemployed are getting more and more divided. It is a matter of deep concern that in our country, the talented and the young generation remain unemployed. And sometimes they also take a wrong step, and because of the blundering youth, they are forced to commit a crime. Nowadays, because of the there is
the rest the society and for our country. So hence it is necessary for the government to take it seriously and find a kind of solutions to minimize the number of the unemployment and we can predict the safe future for our country. So these are our second, these are the two articles we have discussed here, and it is our responsibility to follow what we have discussed and to note down your copies. And after that, if you have any difficulty, you can consult. Now, after this, let's move to the section C drama. As we find that there is direct and indirect. Exercise must be done to find as far as your sentence as far as our paper or summarization. And if you have any questions, now we have few sentences for you to change into indirect speech. The sentence is he said to his brother. Inverted comma start. May I join your company? Question mark inverted comma close. तो फॉर एन एग्जाम्पल सेड को हम कन्वर्ट करेंगे आस्केड में. वेस्टिंग फेज है फिर भी हम आस्केड में ले जा सकते हैं. तो ही आस्केड इज फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर वाक्य से आ रहा है इसलिए हम इफ का प्रयोग करेंगे कामा को हटाने के लिए. तो ही आस्केड इज फ्रेंड इफ ही, मे को हम ले जाएंगे माइट में और को ले जाएंगे हिज में. तो क्या बना ही आस्केड इज फ्रेंड इफ ही माइट join your company. ये बात तो फुल स्टॉप. वो और करके सेंटेंस आ रहा है. They said inverted comma start. Alas. उसके बाद में we have lost everything. फुल स्टॉप inverted comma क्लोज हो जाएगा. तो क्या होगा कि अलास दुख का प्रतीक है, इसीलिए सेरिया सेक्टू किसमें जगह एक्सक्लेम विद सॉरो में. तो दे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे हैड लॉस्ट एवरीथिंग. के बाद में फुल स्टॉप करना. इसी प्रकार से आता है आपका कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स. कंबाइन का मतलब जोड़ना होता है. फॉलोइंग का मतलब नीचे दिए गए और जो सेंटेंस है उनको आपको जोड़ना होता है. एज डायरेक्टेड का मतलब जैसा कि निर्देश दिया गया है. ब्रैकेट का मतलब क्वेश्चन के अनुसार. तो जैसे आपके पास सेंटेंस आ गया ही completed his work. फुल स्टॉप. उसके बाद दूसरा आपका वाक्य है he went home. फुल स्टॉप. फिर उसके बाद ब्रैकेट में रहेगा और ब्रैकेट में लिखा रहेगा सिंपल सेंटेंस. दोनों मतलब वो क्या है सेट कर दिए. तो जब दो वाक्य हो और एक में कार्य का संपन्न होना दिखाया जाए और उसके बाद उसी क्रम में दूसरे कार्य में आगे कार्य का होना बाद में दिखाया जाए तो होने वाले वाक्य में हम प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है उपयोग करते हैं. उसके बाद में क्रिया की तीसरी अवस्था आती है और दोनों में सेम सब्जेक्ट है यानी एक ही प्रकार का सब्जेक्ट है. वहां से हम पहला जो सब्जेक्ट है उसको हटा करके दूसरा सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो इस प्रकार से हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट, उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा.
अब इसमें ओ आर करके लिखा है, दो में एक करके होता है, फिर ओ आर करके लिखा है। जैसे सेंटेंस है आपका Where do you live? क्वेश्चन मार्क, पहला सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस है आपका आई वांट टू नो, के या नो डब्ल्यू, नो। उसके बाद में लिखा और ब्रैकेट में लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स। अब हमें ये तय करना है कि दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है प्रमुख है। तो पहला पूछा गया आप कहाँ रहते हैं, दूसरा पूछा गया मैं ये जानना चाहता हूँ। तो ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट किसमें ज्यादा प्रभावशाली है और कहाँ से है। तो इसका मूल बिंदु यही है कि मैं जानना चाहता हूँ। ठीक, कभी भी जब प्रश्नवाचक वाक्य हो इस प्रकार के वाक्य में, तो जब प्रश्नवाचक वाक्य दूसरे क्षण में आता है, बाद में लिखा जाता है, तो उसको हम अफर्मेटिव में लिखते हैं। तो इसलिए इस वाक्य को जब बनाया जाएगा और अगर डब्ल्यू एच या ये डब्ल्यू टाइप वाई है, वैन है, वेर है, ये आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम क्या करते हैं कि इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, अलग से दैट नहीं लगाते। तो जैसे आपका वाक्य था वेयर डू यू लिव, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क था, फिर उसके बाद में ये था आई वांट टू। तो हम दूसरे वाक्य को पहले लेंगे, आई वांट टू नो वेयर यू लिव। उसके बाद में फुल स्टॉप कर देंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। अब ये तो हो गया आपका सिंपल यानी कंबाइन करने के लिए, सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर अब उसके बाद में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि वाक्य की संरचना भले ही बदल दी जाए, लेकिन उसका जो भावार्थ है वो नहीं बदलना चाहिए। तो इसलिए ऐसे क्रम में आपका जो है लिखा होगा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, नीचे दिए गए वाक्य के रूप को बदलिए जैसा कि क्वेश्चन में निर्देशित है। तो उसमें मान लीजिए आपका अगर डिग्री में बनाने के लिए, जैसे सी इज इन द क्लास, और ब्रैकेट में यानी कोष्टक में लिख दिया गया सी डी यानी कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री में ये देखना उनसे की गई, तो इसलिए कंपैरेटिव डिग्री में हम जानते हैं कि बेस्ट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। अब चूंकि सी से बढ़कर के कोई है नहीं, तो इसीलिए देन ए नहीं लगेगा। तो बनेगा आपका सेंटेंस, जैसे सेंटेंस क्या था आपका, सी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो सी बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, सी बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। अब ऐसे करके अथवा करके आता, अब अथवा में सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या पैसे भी पूछ लेता। तो जैसे पैसे में आ गया आई कॉल्ड हिम फूल, आई कॉल्ड हिम। उसके बाद तो हमें ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ, सब्जेक्ट हो गया आई, कॉल्ड हो गया वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट और फूल हो गया कॉम्प्लीमेंट। फूल से पैसिव नहीं बनाना है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हिम का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है, जिसका सब्जेक्टिव हमें आना पड़ेगा, तो हिम का हो जाएगा ही। फिर हमें ये चेक करना है कि हम किस टेंस में थे, तो हम पास्ट इंडिफरेंट टेंस में थे। हमें क्या करना होगा कि अब एक टेंस जो है आगे जाना होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वाज को लाएंगे, तो ही वाज कॉल्ड, बताए ना जैसे कि ठीक है, जीवन गड़बड़ हो गया था तो उसको बदल दी ना। ही वाज कॉल्ड फूल मी। तो इस प्रकार से ये जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या आता है, करेक्ट द
खाना बना रहे तो जल्दी रहता था ना, संडे था तब हम सवेरे पकौड़ी वकौड़ी बनाए, तब खाई पी लो अच्छे से, तब तई भूखिया तेरी देर में लगा था, तो वही हम सोचे कि अब तनी देर से तो पेट करती है। हाँ जो है हाँ तो बढ़िया है। हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे, तो टुमारो डिस्टेंस से संबंधित है, फ्यूचर से नहीं संबंधित बहुत बढ़िया है। आपका है। सेंटेंस क्या है? असल में पास्ट एक सबके इंडेफिनिट नंबर जो है तो ऐसी वो स्थिति जब में ईमेल होगा तो हमें यहाँ सबके पर नंबर ना आए में यूज ही करना तो पड़ेगा यस्टरडे। सेव किया, लेकिन एक तो नंबर हम सेव किए हैं प्रियंका बुआ के नाम से, इसी प्रकार से शायद पूर्वा का शिवानी के सेंटेंस नंबर लेते पे। हैं। हाँ अच्छा 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 मैं मेड हाँ शिवानी के थे। का एंग्री, उसने उसे नाराज किया। अब एंग्री जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी एडजेक्टिव है, तो द एंग्री का मतलब होता है नाराज लोग। ये जो है आपका लिखित का जो फेज है करेक्ट इनकरेक्ट का वो खत्म हुआ। अब उसके बाद में ऑप्शनल सीरीज और